So case study research method. Actually, this is a deductive research model. You know that there are two major approaches: inductive research approach and the deductive research approach. So in this way, the deductive research approach, this is used to formulate the theory. Okay? और इसमें operationalization क्या होती है? Translation of abstract concept into indicators or measures that enable observation to be made. We use also testing of theory through the observations of the empirical world. Either you have to falsify or discard the theory, or you have to create a new theory. Okay, which may cover your you may provide certain law-like conditions or principles. Okay, and maybe a basis for the future research and future observations. So what is case study research basically? The essence of a case study, the central tendency among all types of case study is that it tries to eliminate a decision or a set of decisions, why they were taken, how they were implemented, and uh, what were the results of that case. So similarly, the case study is the study of a particular case. Either you want to study that case might be an organization as a whole, or that case might be composed of different organization. It means you are going to discuss a whole sector. Sometimes you are just discussing uh, uh, a single the specific aspect of the function of a particular organization. Say you want to study the performance management, performance appraisal techniques of a particular organization. Okay, so sometime you have to discuss any issue, say for example the decline of the sales or etc. Okay, or introduction of a new product line. Okay, so anything which you see as significant and you have to study it, and you have to study it deeply. So that is actually the essence of a case study method. Okay, so this is the proper definition of a case study. Case study actually investigates a contemporary phenomena within its real life context, especially when the boundaries between the phenomena and the context are not clearly evident. So the case studies focus on understanding the dynamics present within a single setting. Okay, this is Eisenhower's 1989's definition. How the case study, as we discussed earlier, it has to study a single setting, a single phenomena of a particular specific organization or a specific sector or a specific geographical area. Sometimes people discuss a single leader, okay, and they take it as a case study. A single person might be studied when that person may have, gone through the different challenges of their career, of their organization, or the leadership career, or the management. Okay, are the specific decisions which might have created a greater impact, positively or negatively, on the organizations, and which might be helpful for the future managers, marketers, or the leaders, or any other people who are the relevant stakeholder of a particular phenomena. Okay. So, how these case studies are used? Say, for example, case studies might be exploratory, and they might be explanatory, and they might be descriptive as well. So, these are the definitely, as we discussed earlier, that whenever we conduct a research, that research might be exploratory in nature, or explanatory in nature, or the descriptive nature. So is the case with the case studies. Yeah. In exploratory research, you are, finding out the solutions. Okay, you don't know you don't know the reasons of a particular phenomena or particular problem. Okay, so you just explore and root out and sort out what are the issues. Okay, say for example, you observe that
a particular organization is experiencing the sudden decline in the sales. So you want to explore what are the reasons. You can see that the people are leaving from a particular organization at a greater rate. So in order to understand why this turnover is high, so you might explore the reasons behind that. Might be there might be the problem with their supervision or the leadership practices in the organization. There might be the problem with the compensation management, or there might be some other problems. So you have to explore. Okay. So you might your case study might be explanatory in a nature that you have to see the specific impact of a particular phenomena on any other the behavior in the organization, or you might assess the impact of a particular decision. Say for example, you are implementing a new ERP system. So you want to check how the people are going to resist it or going to support this new change. Okay, so you may have to check different things. Okay, so in the same way, this might be a descriptive nature when you have to just describe what are the factors which are impeding or supporting a particular phenomena or process. Okay. Case studies can be used to provide description or a certain to test the theory, or and some extent they may be used to generate the theory. Okay. So there might be a variety of the objectives and outcomes of the case studies. Now the question arises where you should use this case study method. Okay. As I discussed earlier, the case study method is gaining its popularity not only in the research, but it is also gaining its popularity in the teaching as well. So it is not only considered as a method of the research or as a research method, but it is also being considered as a teaching method. Okay. So the certain business schools are providing the business degrees or the management education using this case study method. Okay. So the degrees are offered based on this methodology. Okay. So you have to see whether it should be used or not. So the things which you have to consider are the choice of the history. Case studies are basically experiments will depend on the on access. Okay. So you have to see that whether you have access to the data or not. Case studies preferred in examining the contemporary events. Okay. They are these are focusing on very new issues, which are very unique one, for the people to understand it. Experiments are done when the investigators can manipulate behavior directly, precisely, and systematically. So, in experimental methodology, uh, sometimes we have to manipulate the things, okay, in order to check the behavior of our subjects. जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो उस वक्त आपके पास जो है वो सब्जेक्ट्स आपको नोन होते हैं, ठीक है, और फिर आप कंडीशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास अख्तियार हो कि आप कंडीशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और तो उस वक्त आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और तो आप फिर एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी के पास जाते हैं। और अगर आपके पास ऐसे चीज़ें हैं कि जब आपके पास बिल्कुल न्यू इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, और कोई ट्रेडिशनल जो है वो तरीक़ेकार नहीं है मौजूद, ठीक है, उसके लिए तो फिर आप उसको डीपली स्टडी करते हैं और एज़ अ केस स्टडी करते हैं। मगर कुछ लोग केस स्टडीज़ पर क्रिटिसिज़्म करते हैं, और क्यों करते हैं? कि बुनियादी तौर पर केस स्टडी इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज़ अ लैकिंग द रिगोर, ठीक है? मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मतलब बिल्कुल इसमें ना डीप चीज़ें नहीं होती, जनरलाइज़ेबिलिटी नहीं होती, ठीक है? और इसके अंदर जो है आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होती, ठीक है? इट इज़ अ वेरी ईज़ी वे टू कंडक्ट अ केस स्टडी।
or sometimes it is not providing very deep knowledge about overall sector in a broader view. Sometimes confusing case study research with case study teaching. Hello. So people, as I discussed, are using the case study as a teaching methodology. Okay. Some people say that it is good to teach someone, the students of the business education, while using different case studies, but these cannot be considered as a research methodology. The case studies cannot contribute in a scholarly research, rather than they just be used as an example. Okay. So just because of its lack of generalizability for the time period. Okay. मिसाल के तौर पर एक इशू जो है इस वक्त रिलेवेंट है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रिलेवेंट ना हो, या एक इशू जो है अगर एक केस जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रिलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर जगह ही सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, तो इस वजह से वो कहते हैं जी कि केस स्टडी को एज ए रिसर्च मेथड लेना जो है ये गलती होगी, बल्कि इसको टीचिंग के तौर पर लिया जा सकता है। और इट में प्रोवाइड अ लिटिल बेसिस फॉर साइंटिफिक जनरलाइजेशन, और केस स्टडीज टेक टू लॉन्ग. Yes, sometimes there are some certain other issues like केस स्टडीज में जो है वो होता क्या है कि एक्सेस नहीं हो मिलती डेटा के ऊपर, और क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लो लेवल, low confidentiality levels, okay, a lack of trust, you may say, a lack of confidence in the researchers. People don't allow researchers to go deep in the analysis of a particular situation. तो इस वजह से जो है वो एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। तो इस वजह से सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। फिर एक और जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि शायद वो कहते हैं कि स्टडी का मतलब ये है कि किसी एक एरिया से डेटा कलेक्ट करना, यानी सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी के तौर पर वो समझ रहे होते हैं। तो अगर सैम्पलिंग हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कर दी है, सेक्टर की, तो देखो ये भी केस स्टडी है। एक्चुअली दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच ना। केस स्टडी इज नॉट समथिंग लाइक दैट। ओके, कि अगर आपके एक रिसर्चर है और एक जनरल रिसर्च कर रहा है एक जनरल इशू के ऊपर, और फिर वो क्योंकि उसके पास जो है डेटा कलेक्शन के लिए बाकी इदारों में वो जाने के लिए वो रेडी नहीं है या जा नहीं सकता, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को या दो ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करके तो कहता है जी ये मेरी केस स्टडी है, और ताकि डिफेंड हो जाए, सैम्पलिंग टेक्निक उसकी डिफेंड हो जाए। इट इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। Case study is something like something different. Okay, so although normally people are using the case of telecom sector or case of flana, so this is not something like that. So केस स्टडी में कौन सी चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले जो है वो ये है कि यू मस्ट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ केस स्टडी, ठीक है। और ओवरव्यू में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं, और कौन से इश्यूज जो है आप डिस्कस कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर या अगर लीडर को डिस्कस करें तो उसके बारे में, ठीक है। आप थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देनी है कि किस तरीके से वो इदारे डेवलप हुआ और किस तरीके से उसने कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो किए। फिर उसको लेके आप आ जाते हैं कि जो इश्यूज, जो कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपकी करंट केस स्टडी में आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने उसकी रिलेवेंट स्टडीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि स्कॉलरली रिसर्च है तो उसमें ज़रूरी है कि आप उसमें रेफरेंसेस जो है वो भी इंक्लूड करें, और अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने लिटरेचर से और अपने स्कॉलरली वर्क से जो है सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर जो सेकंड जो बात है और वो है केस स्टडी के क्वेश्चन, ठीक है। कि कौन से रिसर्च क्वेश्चन जो हैं आपकी केस स्टडीज होने चाहिए, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो इन्वेस्टिगेटर है ही मस्ट बी ऑन ट्रैक। नॉर्मली लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपने जो बेसिक एम है ऑब्जेक्टिव उससे हट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन के लेवल्स कौन से हैं। मतलब ये कि एक तो होता है ब्रॉडर क्वेश्चन होगा, ठीक है।
اور پھر اس کے کچھ کوشچن ایسے ہوں گے جو سیکنڈری کوشچن ہو سکتے ہیں یا سبسیڈاری کوشچن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کون سا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی چیزیں آپ جو ڈاکومنٹس آپ اینالائز کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ نے رپورٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات آپ کون سی چیزیں اگر سیلس ڈیٹا آپ نے لیا ہے تو کہاں سے لیا ہے, اگر آپ نے فائنینشیل ڈیٹا لیا ہے تو کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں آپ نے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فیلڈ پروسیجر میں جو ہے وہ آپ سائٹس کو لوگ ایکسیس بھی کرتے ہیں اور آرگنائزیشن سے سپورٹ بھی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پورا اپنا جو ڈیٹا کا کلیکشن کا اسکیڈول ہے وہ بھی آپ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے اسٹڈی کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. Analyzing with the field and the cross case data. The preliminary analysis assessed in organizing the enormous quantity of data. Cross case data forces researchers to go beyond initial impressions. Cross case data analysis can look at within the group similarities and intergroup differences. You can select pairs of the cases and list similarities and differences between each group. Forces researchers to look for the several similarities and differences. کراس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس میں پہلے ہم نے بات کی کہ ایک کیس اسٹڈی ہے تو ایک سنگل کیس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کراس کیس اسٹڈیز کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا تو اسی ایک کیس اسٹڈی کے اندر جو ڈفرینشیٹڈ گروپس ہیں ان کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں کہ جی کون سا جو ہے وہ بہتر ہے اور کون لوگ جو ہیں کس طریقے سے پرفارم کریں. مثال کے طور پر آپ جینڈر کو کے پرسپیکٹو میں بھی آپ ان کے سیمپل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ لیڈرشپ پوزیشن کے حساب سے لوگوں کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جس قسم کے آئیڈینٹیفائی گروپس ہیں ان کو آپ آپس میں کمپیئر کرتے ہیں یا آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک کیس اسٹڈی سے دوسرے کیس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر دو سملر ٹائپ آف آرگنائزیشن کو آپ لیتے ہیں اور ان کو آپ آپس میں کمپیئر کرتے ہیں ان کی ریزلٹس کو. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی سی کمپیریزن ڈیولپ کر لیتے ہیں. کمپیریزن جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر جو ہے بہتر طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ ہوئی بات یہاں تک کہ کیس اسٹڈی کے بارے میں کہ کیس اسٹڈی کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے کیس اسٹڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں. کوئی آپ کا یہاں پر کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں.